Hey guys, Assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well, inshallah. Today's video, I'm going to be showing you a very simple and easy smoky eye look that I have created, and all you require is one small teeny tiny palette. As you've read by the title, I have the palette from E.L.F Cosmetics. आप लोग इसकी हालत देख के समझ सकते हो कि ये कोई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट नहीं है. लेट मी जस्ट क्लीन इट अप फॉर द सेक ऑफ द वीडियो. बट ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है. आप देख सकते हो कि मैंने इसको बहुत बहुत यूज़ किया है. एक्चुअली जब मैं अंडमान जा रही थी ना, तभी मैंने ये पैलेट लिया था बिकॉज दिस इज़ सो हैंडी डैंडी. एंड मेरे साथ हिस्ट्री रही है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ या मेरे आई शेडोज़ टूटते हैं या फिर मेरा सामान लॉस्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये लिया. इट रिटेल्स फॉर 350 रुपीज़ एंड दिस इज़ E.L.F's बाइट साइज आई शेडो पैलेट, जिसमें आपको 4 कॉर्ड्स मिलेंगे फॉर 350 रुपीज़. एंड मेरा जो शेड है वो है क्रीम एंड शुगर. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू गाइज. दिस इज़ हाउ इट इज़. आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं एंड डिसेंट पैन साइज मिल जाता है. एज यू कैन सी मैंने बहुत यूज़ किया है. देखकर ही समझ सकते हैं कि मैंने इसको कितना यूज़ किया होगा. सो येस, आई हैव यूज दिस अ लॉट एंड दिस इज़ माई ट्रैवल पैलेट. ऑल्दो इट माइट लुक अ लिटिल इंटिमिडेटिंग कि इससे क्या होगा. सी इफ़ यू वांट टू डू अ नाइट लुक, जैसे मैंने किया है, स्मोकी आई लुक कर सकते हो. या फिर आप दिन के टाइम पे ट्रैवल जब कर रहे हो तो आपको कुछ सटल सा चाहिए, तो बस आप ये जो बोन शेड है, बेस शेड है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ऑल ओवर द लिड अप्लाई करो और या इधर ये ग्लिटर शेड और ये ग्लिटर शेड अप्लाई करो एंड यू आर सॉर्टेड. यू डोंट नीड मोर देन दैट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. आई एम श्योर एवरीवन विल अग्री फॉर दैट. एंड इनमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. पता नहीं, इंडिया में बहुत कम है, अब्रॉड में तो और ज़्यादा है, बट इंडिया में आई थिंक 5-6 वेरिएंट्स होंगे. बट मैंने लिया क्रीम एंड शुगर. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स वेरी टीनी. इट्स अ वेरी हैंडी पैलेट. अगर आप आपकी बैग में भी कैरी करना चाहोगे तो आप आराम से कर सकते हो. जस्ट इन केस यू आर आउटसाइड एंड आपको कहीं पार्टी पे जाना हो एंड यू आर नॉट ड्रेस्ड फॉर इट, यू कैन कैरी दिस एंड ऑन द गो ईजीली आप यू नो मेकअप कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो, जैसे मैंने किया. इट लिटरली टुक मी हार्डली 10 minutes. That's the easiest smoky eye tutorial I've ever done in my life. I don't know why I didn't do a review. I kind of went into a phase and I didn't do any makeup reviews for a long time, but nevertheless, let me just swatch it and show it to you guys. So this is how the darker chocolatey shade looks like. Where do I swatch? Okay, darker chocolatey shade looks like. These are really pigmented. You can choose from whatever shades that they have. The next one is this coppery bronzy tone that they have. This is how it looks like. Look at that pigmentation. It's so smooth, it's so buttery. And the next one is like a champagne gold, perfect for inner corners. See, it just gives you a little pop, so perfect for that. And this is how it looks like. Can you see how blinding that is? Like literally blinding. And then you've got this bone shade. Let me just use this finger. Let me just use this one. So this is the bone shade. Even the bone shade, as you can see, is so pigmented. इस मेरे हाथ पे नहीं दिख रहा है, but definitely it is damn pigmented. अगर आप देखोगे, it will really look nice on your eyes. I have used this time and again. मैंने ऊटी के ट्रैवल में भी ये लेके गई थी, गोवा के ट्रैवल में भी मैं ये लेके गई थी, फिर मैं अंडमान में तो ली थी फॉर दैट पर्पज़. सो मैं ट्रैवल के अलावा मैं ऑलवेज ये अपने बैग में कैरी करती हूँ. इन केस आई नीड टू गो समवेयर, आई कैन यूज़ एनी ऑफ दीज. सो अगर हाईलाइट मैं भूल भी जाऊँ तो आई कैन यूज़ दिस लिटिल bit subtle and I can use it. So this is the eyeshadow palette and I will show a makeup tutorial of this, and you can see how beautifully and easily you can create. Second thing that I wanted to show you guys is this E.L.F bite size blush highlighter duo. I don't know what it is called as. Yeah, it's called as bite size face duo. So you get a lot of shades as well, and I picked up this cantaloupe shade. This blush shade is too light
for any skin tone. If you're really fair and if you're like फिरंगी टाइप्स देन ये वाला शेड चलेगा, बट मैंने ये शेड लेने का एक ही पर्पस था. एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास बहुत सारे ब्लश शेड्स हैं और मोस्टली मुझे ब्लश शेड्स थोड़े डार्क हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा येलोई टोन में लिया है ताकि वो ब्लशेस को टोन डाउन कर सके. दैट्स द ओनली रीजन आई यूज दिस blush. Like I have a color bar blush, I have Swiss Beauty blushes. This is like a yellowy peachy tone, so it blends well and gives a very nice beautiful peachy kind of a look, so that's why I have this. But this champagne highlighter, my god, it's one of the best. I mean I can you see a dent, कितना बड़ा खड्डा कर रखा है मैंने इसमें. इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ. It's a very beautiful shade and let me just swatch this cantaloupe shade for you guys. तो ये वाले तो हो गए आई शेडोज. मैं यहाँ पे swatch करूँगी. Okay, I'll swatch it over here. So this is how the shade looks like. Definitely you can work with this and make it look little subtle, but आपको अगर जितना blend करोगे ये शेड थोड़ा जॉन्डी सी टाइप लगेगा, तो just putting it out there. बट अगर आप डार्क ब्लश यूज कर रहे हो ना तो इट ब्लेंड्स ब्यूटीफुली. देख सकते हो कि कितना स्मूथ बटरी सा है एंड इट डजंट वैनिश ऑफ. अभी मैंने इतना ब्लेंड किया, इट्स स्टिल देयर, इट्स स्टिल शोइंग इट्स मार्क. एंड ये वाला जो है ये शैम्पेन ब्यूटीफुल कलर, this is how it looks like. Beautiful highlighter. I absolutely love it. Can you see? So all I can tell you guys is these are really pigmented and beautiful. In case you wanted something affordable but really good quality, this blush duo is for 400 rupees and there are many shades in this, so you can pick whichever you want. So they are for deeper complexions, lighter complexions, so there is something for everyone. So I would definitely recommend this to you guys. Now you guys see the tutorial and let me know. I will show you from up close how my eyeshadow has turned out to be. Okay, first off I am going to start with the primer. I am using Mars Take a Glow primer. It gives a very beautiful sheen. It doesn't fill pores, but it gives a beautiful sheen. It hydrates so my face doesn't look cakey when I apply foundation. Now next I have taken up L'Oreal's Infallible Concealer and I'm applying all over the lid in sort of way to prime my eyes before I apply the eyeshadow. So I'm going to blend that really well. Then next I will take E.L.F's bite-sized eyeshadow and then I will take the darker brown shade that is there and apply all over the lid, at least most part of the lid. And you don't have to be precise, you can just apply however you feel like and then you can sort of blend it. So that's what I did on the second eye as well. Next I am going to take the bone shade that is there and now blend everything else, like blend it to perfection. And I almost made my palette fall, so now is the time I will clean it up and whatever extra eyeshadow is there I can always clear it up with the concealer. Then I'm going to take this bronze shade from the palette and apply on the inner portion and center of my eyes. Initially it might look not very prominent, but you can definitely build that up. And whatever I need to clean and be precise about, I'm taking a brush and cleaning it because corners में fingers नहीं जाते हैं. नेक्स्ट मैं ये लाइटर शैम्पेन शेड लूँगी और इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी, जस्ट ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द इनर कॉर्नर. दैट्स इट. Then I'm taking Mars Blossom foundation. I completely forgot I had to use the sponge because क्या होता है मैं जब regular makeup apply कर रही हूँ मैं हाथ से ही कर लेती हूँ. But then here I realized I can use a sponge. So I'm just using the sponge from Real Techniques and I'm blending it out. Next मैंने concealer, lighter shade of concealer use किया है, which is from the brand Swiss Beauty. I have done a detailed review of this concealer, so if you want to know more about it you can check it out. The link
of that video will be in the description box. Next, I'm using Wet n Wild's Color Icon blush shade. I will leave the links of the products that I have used in the description box so you can check them out. Then I'm using Mars का setting powder. I don't know, ये बाल मेरे आँख में बहुत आ रहे थे. But any which ways, then I used LA18's eye pencil, and I'm tightlining the waterline. Then I used the darker brown shade on my lower waterline and smudged it a little bit. And then whatever the inner corner highlight that was disappeared, I reapplied it, and then I curled my eyelash. Next, I am going to be doing the eyebrows. I am using the Wet n Wild's eyebrow kit that you get with a mirror. So I'm using that. आप उसकी हालत देख के समझ सकते हो, मैंने बहुत यूज़ किया है. Next, I'm setting my face with Max Fix Plus. I will then use the highlight from E.L.F that I discussed with you guys and talked about it on the wet surface itself. It should not be too wet, but it shouldn't be too dry because highlighter or prominently दिखता है. And whatever feels like too patchy or splotchy, you can use a sponge and dab. But look at the highlight. I mean, it's so blinding and so beautiful. यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ. जो भी मुझे excess लग रहा है वो मैं dab कर रही हूँ ताकि जो इवन दो सेटिंग स्प्रे के स्पॉट्स ना दिखें. नेक्स्ट मैं स्मैश बॉक्स का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. ये लिपस्टिक्स मुझे उतने पसंद नहीं है बिकॉज ये आई थिंक मैंने थर्ड टाइम यूज़ किया है, बट ये ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है. देन बहुत ड्राई फील हो रहे थे लिप्स, तो मैंने थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर लिया. विद दिस माई मेकअप इज़ डन. ओके, कितने अच्छे से मतलब कलर आया है. एंड इवन द हाईलाइटर, आई मीन इट्स सो ब्लाइंडिंग, so blinding. I absolutely love it, and I want you guys to pick it up if you want to buy a new highlighter or a new eyeshadow palette. Then this one is very good one to pick up. So I will see you guys in the next one. Till then, you guys take care, stay safe, and